Do let me know, right, once my screen is visible to everyone. Recording has been started. Yes, visible. Perfect. Somebody is waiting. Hmm, Take it here. Okay. So yesterday I have given you, right, one homework, right? Hope everyone had done that. So anyone want to talk about the differences between, right, a servlet, right, and CGI? Anyone? The first difference, hello. Yes, go ahead. The first difference is that the servlet is a Java program, and so that it is a totally platform independent. It means it can run on any platform. Mm-hmm. Okay, but on the other hand, CGI is a totally platform dependent. Any reason? Can't it be platform independent? What could be the reason of not being a platform independent? And if is this statement correct? Because, for example, if I can choose any programming language, right, to do a CGI. Even I can write use Java, right, based technologies, right, any programming language. If I use them, right, obviously it will become again, right, program independent. The only drawback, right, you are right anyway, but if I write my CGI, right, using some scripting language, right, obviously maybe, right, which is not capable of running in other, right, platform, obviously it will be a stuck. So there is a mix, Vishal. Okay, so it would not be a very fair statement to say that they cannot be platform independent. CGI can be also platform dependent, but yes, in a context you are right, I would say. Okay, now go ahead, Vishal. Am I audible? Yes, Rajiv, you are audible. Uh, so servlet is based on basically thread, Perfect. and CJ is based on basically on process. So servlet is it's a thread that is for every new request, new thread is created for every new, Yeah. and for CGI, for every new request the process will be created. Hmm. And जो जो इसके सर्वलेट के जो कोड्स हैं वो जावा प्रोग्रामिंग में लिखे जाते हैं, Mm-hmm. और सीजीआई को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में we can Mhm. write. Yes. Yeah, that's true. And now the caution comes, right? You have done good homework, right, Vishal, Rajiv, thanks, right, and everyone who had, right, gone through that. So the caution comes now. Now you know, right, some of the important differences, right? There are so many, right? But you know very important differences now. What you have spoken, right, is exactly right what I want. Now, why Jenkins had chosen, right, a servlet approach, not a CGI approach? So this is a question, right? Generally, right, anyone can ask you, right, at the time of interview. Right? So can anyone think and speak? Anyone who had, right, done this homework because can because correlate. because servlet itself, sorry, Jenkins itself is a written in a Java language. So that's why someone choose, right, Jenkins to write in Java language. That's what the reason, right? That it was as a servlet, right? I Yeah. will use Jenkins as a servlet. See, answer is there, right? Itself what you have already said, right? Example in terms of threads and processes, right? This is the main reason behind it, thinking about it. And also, right, in terms of extendability, right? So obviously, right, in CGI, the extension of code is not that easy. That is one of the area. But when you say, right, in terms of threads and process, yes, that is the main reason behind, right, choosing, you can say, servlet approach. Now think about, you created Jenkins using CGI approach. Let's diagrammatically say this is your server, right? You had a very good server, right? So say it is very, right, good configured server, and here you Deepak, your have, voice is little Sorry, low. Deepak, to interrupt you, but is anyone waiting for joining meeting?
I don't see in my list. I don't see anyone. Okay, because in WhatsApp they are saying like that. Okay, fine then. Let me just give me 1 minute. I will also check, right, and I will. If someone had messaged, right, and is not able to log in, please let me know. Ashwini, Aryaman, some these are the guys who are pinging me. Mm, Let me ask. Ashwani is there in call? Hi, Ashwani, you there? There are two people, Rajat and Ashwini. Yeah. Hello, Rajat, Ashwani, are you in? Yeah, I think Ashwani has been added. Ashwani, there. Uh, Yes, yes, Raj- Deepak. Rajat, you are also there because I don't see now anyone right in the list. Let me reply. Okay. So guys, thank you. Keep if someone write WhatsApp, please let me know. Right, I will add them. Okay. So say this is your server. Okay, and inside that, say you are using CGI approach, and so you had a CGI server. Now Saket is waiting. So this is your CGI server. Could be written in any right language, and most probably right scripting languages right uses it, right, and they lack something called what, object oriented programming, right. So these are various differences that you will read, but our understanding should be in terms of this is a CGI server, right, which needs to be written right in a specific language. So the demand would be right the container right on which right this is CGI server will be running, right, the web container would be right they cannot use some right already pre-existing, right, they might have to write their own server. In that term, right, interdependency would be there. Okay, so for example, I will need to launch Python web server right to do a development of CGI using Python coding, right. So these are the right different contexts. Now, as you said, right, there will be multiple users, right. Say I am giving them a very good a good you can say front end in terms of right doing some retail action, right. I am providing them services, and I use CGI. Okay. Now, don't think terms in terms of auto scaling now, right? Just think you have only one server, right? And now this all users are requesting to this server. So as Rajiv said that each request is a process. What? Yes, Rajiv, you said right. So each this request right will come to this server, the main server, right, as a process. It will be treated as one process. Okay. So each request is treated as one process. What does process do? What is process? When an operating system allocates its resources to execute a particular task, so at that time it will become a process. Okay. So process is a set of right actions or protocols, right, that is Yeah, yeah. done by a program basically, right? Yes, yes, yes. Okay, that's true. That is a very right, bookish definition. That's true. But yes, each process, as you said, right, will we get allocated resources, right, from the server. For example, some RAM, right, some amount of CPU, right, to do that processing of whatever the request is. Now, I have just placed say 1, 2, 3, 4, 5. Now think if I have 1,000 users and only one server, right, and I'm requesting right to this CGI server, and think the CGI server is a Jenkins. So what will happen? Load will be increased. Your server will get loaded, right, Yeah. because
obviously the process will consume, right, definitely memory, because you are treating them as a process, and that's the reason, right, which will overwhelm the server. Okay, though CJ server is capable of doing dynamic page, or right, giving you, right, whatever you want as a get request, post request, whatever you want, like any, right, you can say web development, right, it will do that because it is going to call those CGI scripts basically. So CGI server is going to talk with your scripts or code, right, through which you are, right, doing certain activity like uh, as per the request page creation, right, and then displaying it to the user. So all this is done, right, by the CJ script also, as usual, like the servlet also, right. So in case of a servlet, we generally call them as applets, right. uh, Whatever the right execution of code happen, right, as per the request, this will go to them. So in CGI case, we call them what? Shells, CGI shells, right, or CGI scripts, right, which are basically getting executed. Now the problem is, right, if there are 1,000 users in Jenkins and I have a server with limited resources, and if they hit me, right, obviously my server will crash at certain moment of time, right. So I cannot use, right, a CGI approach, right, for such use cases. Okay. दीपक, अभी आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन था मुझे कि आपने जब जो बोला कि CGI सर्वर, ओके, सो बैकग्राउंड में आपने ऐसा भी बोला कि Jenkins, so can we write Jenkins and can we use CGI with Jenkins? I said, if assume, right, that you have written, right, your Jenkins is as a CGI server. That is an assumption. Jenkins is not a CGI. Yeah, Okay. yeah. So I'm saying assume कि अगर हमने सर्वलेट अप्रोच यूज नहीं करके Jenkins CGI में बनाया, ठीक है, तो क्या होगा, Okay, okay. क्या प्रॉब्लम होगी, राइट। तो प्रॉब्लम ये होगी कि हम हमारे पास रिक्वेस्ट तो आएंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट में, राइट, एक सेंट्रलाइज जेंकिंस सर्वर आपने सेटअप किया और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लोगों को बोला अपना जॉब रन करो, राइट, एंड हर कोई, राइट, हर टीम में मान लो 10-10 20-20 यूजर है, और हर कोई जाके उस जेंकिंस सर्वर को हिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली सर्वर बैठ जाएगा। ट्रू, Yes. राइट। This is one thing. Another thing, another very important, you can say, challenge is in terms of the communication between, right, two requests. Sometimes it is also required. So inter-process communication, right, cannot happen, right, or very difficult, right, to do. मान लो एक रिक्वेस्ट एक यूजर कर रहा है, उसके पास कोई डाटा है और आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, दोनों का सिमिलर डाटा, एंड राइट एट द एंड सीजे सर्वर वांट टू टेक बोथ द रिक्वेस्ट एंड डू सम सर्टेन, right, transaction between those two processes, which is, right, very difficult to do, right, but in case of threads it is what possible, right. In case of threads, two, right, such request can be, right, intercommunication ho sakta hai in certain cases. This is again one of the differences that I am talking about. Now let's come that someone is showing his drawing skills. Please don't do that, or by mistake is happening, please avoid. Okay, now say we have servlet. Okay, now in servlet, the each this request will be treated as what? Threads instead of process, right? Now the benefit of, right, having thread, that they can be what? Queued down, right? Obviously process is only single process. The servlet will be treated as a single process, and this servlet will be taking those requests as threads, right, and it will decide how many, right, such thread I can process in parallel. Now you got my point. CGI don't have that flexibility, but servlet have, because servlet के पास जो request आ रहा है वो as a कैसा आ रहा है, वो servlet कैसे treat कर रहा है उसको, not as a process but as a thread. और ये जो थ्रेड है, राइट, ये जो सर्वलेट है वो एक प्रोसेस है, मतलब देयर वुड बी अ सिंगल प्रोसेस रनिंग. नाउ आई विल ओवरलोडिंग माय सर्वलेट, राइट, इफ आई रन पैरेलल थ्रेड्स टुगेदर. मतलब मेरे पास 5 रिक्वेस्ट है, मैंने बोला मैं पांचों रन करूंगा, तो ऑब्वियसली जो 5 थ्रेड जितने रिसोर्स खाएंगे, राइट, उतना सर्वलेट का प्रोसेस कंज्यूम करेगा सिस्टम से. लेकिन मैं अगर बोलूं सबलेट नहीं, मेरा सिस्टम रिसोर्स इतना अच्छा नहीं है, और आई कैन रन, राइट, 2 जॉब्स इन पैरेलल, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्फ़िगर करूंगा अपने सर्वलेट को उस हिसाब से कि 2 थ्रेड प्रोसेस करेंगे पैरेलली, बाकी क्यू में रहेंगे. जब वो 2 थ्रेड में कोई खत्म होगा, तो हम जो रिक्वेस्ट है उसमें से किसी एक को पिक करके रन करेंगे. डज दिस स्टेटमेंट
is clear to you what I am saying? नो दीपक, नहीं हुआ क्लियर? ठीक है, नहीं। ये सर्वलेट है। अब पहले मैंने क्या था, सीजीआई एक सर्वर था, है ना, और उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट आ रहे थे वो क्या थे, हर कोई रिक्वेस्ट एक प्रोसेस था। तो सीजीआई के पास कंट्रोल नहीं था, हर कोई रिक्वेस्ट आएगा उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ प्रोसेस रिक्वेस्ट आ रहा है। ये क्लियर हुआ है स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ? यस। ठीक है, नाउ कम टू सर्वलेट। सर्वलेट के पास ये सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बट ये रिक्वेस्ट क्या है, प्रोसेस नहीं है, क्या है ये, थ्रेड्स हैं। ठीक है, और सर्वलेट डिसाइड कर सकता है कि मैं एक बार में कितने थ्रेड्स को प्रोसेस करूं। ओके। तो सर्वलेट में कॉन्फ़िगर किया, नहीं मेरा सर्वर का रिसोर्स कैपेबल नहीं है दो से ज्यादा राइट थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सर्वलेट क्या करेगा, दो थ्रेड्स को क्या करेगा, रन कर देगा, उसके अपने जो भी प्रोसेस है, पेज एलोकेशन, गेट, पोस्ट रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स उसको मिलेगा। बाकी 3 क्यू में रहेंगे जब तक वो दो थ्रेड्स के जो प्रोसेसिंग है वो खत्म नहीं होती सर्वलेट से। ओके, तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो मैं सर्वलेट के कारण क्या कर रहा हूँ, अपने सर्वर पे जो रिसोर्स है उसके हिसाब से उसको काम करने बोल रहा हूँ, करेक्ट? यस। बट इन केस ऑफ सीजीआई दैट कंट्रोल आई डोंट हैव, राइट? तो ऑब्वियसली जितना रिक्वेस्ट आएगा मेरा सर्वर बर्डन होगा, और सर्वर बर्डन होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे सर्वर क्रैश होने के चांसेस है। बट इन केस ऑफ सर्वलेट, इफ आई right plan my parallel execution right properly as per my resources, then I can control right exhaustion of right my server resources. तो इट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर्वलेट के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो थ्रेड को मैनेज कर पाएगा, इसकी वजह से वो ओवरलोडेड नहीं हो सकता है, राइट? बिल्कुल हाँ, या और जिसे अगर मैनेज कर पाएगा मतलब मेरे पास 2 GB रैम है और मान लो 1 CPU है, ठीक है, यस। और मेरा एक थ्रेड, ठीक है, चाहता है 300 MB लेना, ठीक है, हर कोई एक थ्रेड 300 MB लेगा, मेरे पास कितने रैम है, 200 है, तो आई कैन मैक्सिमम रन राइट 200 डिवाइडेड बाय राइट व्हाट मतलब 2048 व्हाटएवर डिवाइडेड बाय 300 विद सर्टेन राइट यू कैन से बफर राइट, कम करके उतना मैं बोलूंगा, उतने में जॉब रन करूंगा, राइट? और ऑल्सो यस। सीपीआई का भी पैरामीटर आएगा मेरे कैलकुलेशन पे कुछ, राइट? तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा, ओके मैं 3 ही राइट थ्रेड्स प्रोसेस कर पाऊंगा पैरेलल में। बाकी अगर लोगों ने मेरे पे 50 रिक्वेस्ट भेजे तो मैं आउट ऑफ 53 पैरेलल प्रोसेस करूंगा, बाकी सबको क्यू में रखूंगा। यस। Okay, so that what we can do, right? And that what we will see, right? While हम लोग जब Jenkins इंस्टॉल करेंगे तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन वॉक थ्रू करूंगा मैं आपको यूआई में, तो आपको पता चलेगा कि एक पैरामीटर आएगा, right? That is what execution numbers, total number of execution, that is nothing but number of threads that you want to allow. Okay, so this is the reason right why I want you to understand, right? Because कि अगर आपको ये पता नहीं है सर्वलेट और CGI के बीच में डिफरेंस और how Jenkins actually manage, then you are just using Jenkins, right? You are not aware of the facts behind, right? Jenkins is using servlet approach. Okay, दीपक मीन्स सीजीआई एट अ टाइम वन प्रोसेस ही हैंडल कर सकता है, पैरेलल नहीं, प्रोसेस नहीं, राइट? CGI at a time 1000 कर सकता है बट कंट्रोल नहीं है, ठीक है? अगर यूजर ने 1000 रिक्वेस्ट भेजे, 1000 गेट रिक्वेस्ट आए मेरे पास, मैंने सीजीआई में कहा, तो 1000 के 1000 सर्वर प्रोसेस करने लग जाएगा, क्योंकि ईच रिक्वेस्ट इज व्हाट, अ प्रोसेस, नॉट अ थ्रेड. And CGI has to what? CGI is just a medium, right? Which will process, right, and take you to the exact right script that right needs by you. तो उसको तो प्रोसेस करना ही है ना? तो उस केस में क्या होता है, हम थ्रॉटलिंग का अप्रोच यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ऑटो स्केलिंग ये सब मत पूछना मुझे, लोड सर्वर। तो अगर ऐसा है और सीजीआई यूज किया तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं पे लोड सर्वर के थ्रू थ्रॉटलिंग और ये सब चीजें करने की कोशिश करूंगा। जो रिक्वेस्ट मुझे प्रोसेस करने में वो करूंगा, जो नहीं करने उनको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, राइट? या मैं 50 ही करूंगा, बाकी 50 को मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगा, ठीक है? इस तरह की चीजें करनी पड़ जाएंगी, समझे? सीजीआई के ओके, केस में ओके मीन्स जितना लोड हैंडल कर सकते हैं उतना ही एट अ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, या तो फिर मैं बोलूंगा नहीं, जो लोड ज्यादा आ गया है मुझे और मशीन चाहिए, है ना, तो मैं ऑटो स्केलिंग करके उसका रिक्वेस्ट प्रोसेस करूंगा। बट जेंकिंस के केस में मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करता। जेंकिंस तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक टूल है ना, कंटिन्यूअस बिल्ड सिस्टम है ना,
अगर मैं उस तरह से सेटअप करूंगा तो मैं तो अपने फुटप्रिंट्स या अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहा हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को बढ़ा रहा हूँ। करेक्ट? क्योंकि मेरे को वो बनाने के लिए क्या क्या एंटिटी लानी पड़ी, ऑटो स्केलिंग इनेबल करो, लोड बैलेंसर लाओ, ये सब चीजें करो, है ना? समझ रहे हो? सर लेकिन एक क्वेश्चन ये है, मतलब मेरी तरफ से कि मेमोरी मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो मतलब जैसे एक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, एन नंबर ऑफ प्रोसेस, आफ्टर द कंप्लीशन मतलब क्या रिमूव हो जाती है मेमोरी से। हाँ, लेकिन रिलीज हो जाती है, दैट्स ट्रू, राइट? जब हो कहते हैं अगर प्रॉपरली एप्लीकेशन लिखा है कि वो प्रॉपर एलोकेशन और मेमोरी का, राइट, वो करता है, मैनेजमेंट करता है, राइट? तो डिपेंड अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू चूज। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू दैट। एग्री विद यू बट राजू। लेकिन अगर मैं थ्रेड की बात करूंगा तो वो रिमूव नहीं होगा मेमोरी, सो मेमोरी विल बी बिजी इन दैट सिचुएशन, राइट? सी फॉर एग्जांपल, आपने अगर 5 रिक्वेस्ट किए, राइट, पांच पांच रिक्वेस्ट की जिसमें से 2 करना है, तो थ्रेड को कुछ मेमोरी एलोकेट होगा, राइट? बट दोज आर व्हाट? अनयूजेबल मेमोरी, राइट? क्या बोलते हैं, मतलब एलोकेट किया हुआ है बट यूज में नहीं है। जब तक उसको प्रोसेस नहीं करेगा तब तक नहीं है। तो एनी वन कैन गेट रीयूज दैट मेमोरी। समझ रहे हो हाँ, राजीव? तो वो फायदा मिलता है थ्रेड में। तो आपका जो प्रोसेस है, जो एक्चुअल मेमोरी कंजम्पशन है, वो थ्रेड्स हैं जो अलाउड है सर्वलेट के द्वारा। बाकी सब क्या क्यू में है, अभी उनको रिसोर्सेज एलोकेशन नहीं हुआ है। जो प्रोग्राम है वो उसको कुछ एलोकेशन करेगा, वो रिक्वेस्ट लेके बैठा रहेगा, जब उसको प्रोसेसिंग करेगा तभी एलोकेट करेगा ना मेमोरी। ओके ओके, गॉट माय पॉइंट? मेरे पास यस रिक्वेस्ट आ यस, गया है, मैं प्रोसेस करने के लिए वेट कर रहा हूँ, जब मैं प्रोसेस करूंगा तब। अभी मेरा जो सर्वलेट है वो इटसेल्फ एक प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है, राइट, ये इसका जो मेमोरी कंजम्पशन तब बढ़ेगा जब वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा कि मैंने इतना मेमोरी किया है, ठीक है? ओके। So this is right, are something, right, which you have to, right, aware of. सर एक क्वेश्चन और, सब Sure. एक थ्रेड, मतलब जैसे एक थ्रेड है तो उसका चाइल्ड थ्रेड भी क्रिएट हो सकता है, राइट? ऑब्वियसली, बट प्रोसेस का नहीं। प्रोसेस के सब प्रोसेस तभी क्रिएट होते हैं जब उसके अंदर में आपने, राइट, कुछ लिखा है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? या थ्रेड हाँ, का सब थ्रेड हो सकता है। हो सकता है, बट हम्म, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे जो मेन थ्रेड है मेरा हम्म, वो कंप्लीट होता है, लेकिन जो चाइल्ड थ्रेड है वो कंप्लीट नहीं होता है, हम्म। तो जो अदर थ्रेड क्यू में है तो वो वो इम्पैक्ट होंगे, वो ओके इम्पैक्ट होंगे, डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे। सिस्टम इम्पैक्ट होगा, मतलब प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ है, आपका प्रोग्राम सही नहीं है। समझ रहे हो राजीव? यस, राइट? सो दीज आर व्हाट, some bugs in your code, right, that need to be fixed. अगर आपका चाइल्ड प्रोसेस खत्म होने से पहले आप मैन प्रोसेस खत्म कर रहे हो, तो आपका चाइल्ड प्रोसेस तो ऑर्फन हो गया, राइट? इन एनी वे, राइट? वो यस पड़ा यस, रहेगा, और वो पड़ा रहेगा, धीरे 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 आपके सिस्टम को क्या करेगा? मेमोरी लीक हो रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है? और राइट, इवन सीपीयू का भी जो साइकिल है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो आपके सिस्टम को आगे जाके वो क्रैश कर देगा अगर वो मैनेज नहीं किया। दैट इज द जॉब ऑफ सर्वलेट. Who has written that servlet? To manage ओके, that. थैंक तो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, राइट, मेमोरी जो एलोकेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, जावा, राइट, सी, एंड देयरफॉर दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर, राइट, रनिंग एक्चुअल प्रोडक्शन इंजन्स। बट आप देखोगे हैवी उसके लिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको सोचना पड़ता है। जैसे इवन पाइथन से अगर मैं कोई इंजन बनाना चाहूँ तो मैं बहुत सोचूंगा, मैं सोचूंगा रेदर आई विल चूज, राइट, सम हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, राइट, और जावा। प्रोटोटाइपिंग के लिए ठीक है पाइथन, है ना, और ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बट एक इंजन क्रिएट करना तो आपको बहुत कुछ सोच समझ के पाइथन में बनाना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, यस। ओके, नाउ we are good, right, in that context. Now question would be, right, can come, right, ki, if you know Jenkins, can you tell, right, the name of servlets, right, that Jenkins uses? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? जैसे लाइक अ ट्रिविया, बट इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, एंड देन इफ यू आर, दो वी आर यूजिंग जेंकिंस फॉर इयर्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि भाई कौन सा सर्वलेट है, सर्वलेट का नाम क्या है? एनीवन?
So these are basically very famous, right? Windstone, Jetty, or you can also name like Glassfish, Apache Tomcat, right? These are all different kind of, right, servlet issues, but they are actually want to listen you the default ones, right? Basically, right, Jenkins uses are Jetty, right, Jetty, and Windstone, right? These are the two servlets that, right, they always want to hear. So just keep in mind, right? It's not that important, but yes, क्या पता पूछ लिया तो. And Jetty and Windstone, Winstone, Windstone. Okay. Now I will come to the fundamental understanding in terms of, again, since we are learning Jenkins, so I want to understand again from you. Can anyone define me, right, continuous integration and delivery, event deployment? Continuous integration means the process in which the build process means actually उसमें होगा क्या कि डेवलपर उसका कोड जो मैनुअल पुश करता है, यानी कि जो कुछ भी मैनुअल काम करता है, सपोज एक डेवलपर ने कोड किया है, उसको बिल्ड किया है, उसके बाद में उसको टेस्ट किया है, तो ये सब उसने मैनुअल किया है. बट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैनुअल इंटीग्रेशन, बट this is not a continuous integration. In continuous integration, this should be automated process, like when कि एक आधे डेवलपर ने सब उसका कोड किया है, उसके बाद में उसको पुश किया है सेंट्रल रिपोजिटरी में, उसके बाद में वहां से जेनकिंस ने कोड उठाया है, उसके बाद में जेनकिंस ने उसको बिल्ड किया है, बिल्ड करने के टाइम पे कुछ उसको एरर आया तो उसको रिपोर्ट भी करेगा. सो एवरी टाइम this process will happen in each iteration, so this is called as continuous integration. Okay. So basically you are right, and so basically if someone asks me, right, I will always use, right, the way you have spoken, but I will always also say ki, if someone, right, is working on any application, right, or any you can say product, right, and if we are doing development, and if I commit, right, n times in a day, right, I should have a system in place which should, right, build my product or my application to generate my application artifact n times when I, right, commit the changes in my code n times. So I should have that system in place. If I have that system in place, right, which uses my code to generate application artifacts, right, and deploy it into certain environment on my every commit, then I am doing continuous integration. Okay, got my Yeah, point, Deepak. right, what I mean to say, and it's very similar, right, what you also said. So this is what the very important aspect is. Okay, now continuous delivery is what? sir, in continuous delivery, in such a way that software can be released to the production server. Okay, obviously this continuous integration should be a subsystem of continuous delivery, correct? Without Yes. continuous integration, right, I cannot achieve, right, continuous delivery, right? So continuous delivery comes when you are going to give your product to a user to use it, right, whether it is a beta user or whether it is actual, right, genuine user, right? If you have a system which is capable of doing that, right, then you are actually means at every commit, if your product becomes usable to, right, a consumer or user, then you are doing what? Continuous delivery. It's a very strong statement, right? But this is what continuous delivery would be. मतलब मैंने टेस्ट वेस्ट जो भी है सब मेरा साइकिल पे है, राइट, डेवलपमेंट के साइकिल पे, मेरे कमिट के बेसिस पे वो सारे सिनेरियोस फुलफिल होने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद, राइट, उसका वैलिडेशन होने के बाद, उसका स्टेज टेस्ट होने के बाद, अगर मैं वो यूजर को दे सकूं प्रोडक्ट, राइट, ऑन माय कमिट, देन आई एम यूजिंग कंटिन्यूअस डिलीवरी. करेक्ट और नॉट? यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes. ओके, एग्री तो होना पड़ेगा. ठीक है, मतलब ऐसा ही है, राइट, कंटिन्यूअस डिलीवरी यही है. और हमने कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था बहुत पहले. तो डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट क्या है? Main difference that is for every change in continuous deployment that you make goes to the pipeline.
it, if it is if it passes all the tests, then it automatically get deployed to the production. Yeah. And for every मतलब इसके हर एक चेंज के लिए जो है डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली होगा अगर वो टेस्ट पूरे टेस्ट पास कर। Yeah. So that's what, right? मैं सब कुछ टेस्ट वेस्ट करके सब कुछ लेके चला गया, right? और मेरा सब सारे टेस्ट इवन यूएटी वगैरह सब सही है, ठीक है? Now I am ready to take it to the customer, right? Now, do I have a approval system in place, which is not manual, right? Which after having UAT testing, right, introduce something, right, through which someone can approve, right, and then on that approval, right, it goes to the right production systems, right? If I have that automated process in my continuous delivery, then I am doing continuous deployment. नहीं तो else क्या होता है, मैं स्टेज या प्री प्रोड तक करने के बाद मैं रुक जाता हूँ, right, for stakeholders or senior stakeholders, or you can say, right, decision makers basically, to give the approval, right? And if they approve, then only I go for the deployment in production, right? तो जनरली आज के डेट में भी बहुत जगह पे ये प्रोसेस ऐसा ही है, राइट? और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे दे हैव क्रिएटेड, राइट, सर्टेन वे so that it generates an email, right? It goes to that person, he looks into, right, how the results and everything, or think about it whether it's the right time, right, to ship it to the production or not. And after that there is a link, right, which may expire at certain interval or which may not expire, and if he clicks, right, it actually triggers, right, your configuration management tool, right, which can do the deployment, right, in all the machines, right, or all the specific components in the production subsystem. Now you got my point. So difference, right, between continuous delivery and deployment. A continuous delivery with an automated approval process is a continuous deployment. Okay. दीपक कंटिन्यूस डिलीवरी एक बार बताना प्लीज। कंटिन्यूस डिलीवरी यही है कि आपने कमिट किया कोड को, ठीक है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हुआ, मतलब आपका टेस्ट, राइट, कोड के बाद यूनिट टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट होने के बाद सब कुछ होने के बाद वो एक क्यू एनवायरनमेंट में क्या आपने कंटिन्यूस इंटीग्रेट किया, मतलब एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो रहा है, फिर वो टेस्ट हुआ, सब कुछ टेस्ट होने के बाद, राइट, वो आगे प्रोपेगेट हुआ, आगे के स्टेज पे गया, मतलब डेवलपमेंट से क्यूए पे गया, क्यूए से वो स्टेज पे गया, राइट? जब स्टेज पे आया और स्टेज पे भी सब कुछ सही है और उसके बाद वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट हो जाता है, तो दैट इज कंटिन्यूस डिलीवरी। Okay. Yes. So obviously, continuous delivery will consider what? Continuous planning, continuous integration, continuous testing, and continuous deployment. Right? ये सारे चीजें रहेंगे, तो I can say I have a continuous delivery, right, in place. ठीक है? Yes, Deepak. Okay. Now this is the depiction of the same thing, right? Where say bunch of engineers, right, working on a product, when they do a commit, I have, right, do that. I have, right, written, right, some jobs or actions in my build system, which is nothing but a Jenkins, so that every commit can be polled by this system, right, as per the commit of the code, and it should trigger that job, right, or that action, which could be doing dev related, QA related, or stage related activity, right? Or it could be a chain reaction of my jobs, right? Each job in sequence, right, take care of dev, QA, stage, and as per that, right, I do, right, delivery. So obviously the central place, right, is what? Build system for continuous integration, continuous delivery, continuous deployment aspects. Your very central core place is what? Your build system, and that is responsible, right, for your continuous delivery, integration, testing, all the aspects. And that's where the Jenkins, right, comes in picture. Got my point? So basically Jenkins is what? It's not mere a tool, right? It is what? It is a platform, right? It is a build platform, and this build platform has a capability to get integrated, right, with various tools like JDK, say for example, Maven, right? For example, build tool, right? One of the example of build tool, artifactory servers like Nexus,
right? JFrog. So obviously everything will get integrated with the system. Your system knows, right, where you want to deploy and do right action. Then again comes what configuration management tool like Ansible, right, Terraform, whatever, right, you want to integrate. You can have to integrate with build system to achieve that. So obviously it is the central place where you will look for all those integration, and obviously you will expect that my job can be extended to talk, right, any other tool that I want to integrate with. That capability is with what? Jenkins. That is why Jenkins plays so important role in continuous delivery. And similar tools like Jenkins, right? For example, can anyone tell me like Bamboo, Salt Stack, right? Anyone? Any more tool that you are aware which are nothing but like a build systems? Hudson. Hmm? Hudson. Uh, it's brother of Jenkins. Yes, Okay. yes. Okay. So at certain stage, right, it has been branched down, right? It went to IBM, right? And now I would say, right, the current Jenkins, which is open source, is much rich than the Hudson. Okay. Have you heard about TeamCity? Yes, yes, yes. That is also what that is also a build system, right? Right. It's like a Jenkins like, right? So there are many tools, right, in the market. It's right, and Jenkins is an open source, right? And why it is so popular? Because it's plugin or you can say library in terms of extendability to integrate with any tool, right, is far richer than most of the right tools in the market. Now, if you see GitLab, is again an example of right a build system or a build platform which comes with right each and everything. It's also getting popular. If you go to AWS, there are right developer tools like code commit, code build, right, code pipeline, code star, right. These are the things, right, which are very similar to what Jenkins which is capable of. Similarly, there would be for GCP, Azure, right, they have their own native services, right, which would be capable of them. So if you understand build system, it would not be difficult to start working on any other right tools. For example, अगर आप आपने भले ही Jenkins पढ़ा अच्छे से, बहुत अच्छे से, और आप लैंड अप कर गए ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे AWS के नेटिव सर्विसेज यूज करने हैं, तो आप क्या यूज करोगे? आप Jenkins वहाँ यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे? वहाँ पे आप AWS का टूल यूज करोगे, राइट, लाइक कोड बिल्ड पाइपलाइन. तो आपको करना क्या है वहाँ पे, समझना क्या है वहाँ पे, भी क्या होगा, एक जॉब लिखा होगा, वही जॉब एग्जीक्यूट होगा, है ना. वो जॉब एग्जीक्यूट होगा तो उसके कंसोल लोग कहाँ बनेंगे, कोड बिल्ड में कहाँ बनेंगे, तो इस तरीके से आप कंपेयर करोगे, राइट. एंड दैट इज द वे, राइट, लर्निंग वन ऑफ द build system tool, right, will enable you to work on any other build system. Only yes, you will need some time to, right, grasp on the various aspect of it. Any question on this? No. दीपक, मैंने एक बार मतलब एक्सप्लोर किया था AWS पे, वहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना वो पाइपलाइन में पुश करने के टाइम, तब वहाँ पे वो इमेजेस भी होते हैं, लाइक मतलब हम सिस्टम ले सकते हैं अमेजोन हाँ, तो लाइनक्स या करेक्ट, दैट इज प्लेटफॉर्म तो ना, जो आप रिसोर्स प्लेटफॉर्म जो यूज करते हैं. जैसे कोड बिल्ड है, मैंने क्या बोला, कोड बिल्ड. अब कोड बिल्ड क्या करेगा, उसको अगर मैं कुछ चीज रन करना चाहूंगा, मान लो मैं एक स्क्रिप्ट रन करना चाहता हूँ, तो कहाँ रन करेगा? ओके, सो वो मशीन पे रन कर तो देगा. उसको इमेज चाहिए होगा ना. तो सिमिलरली इन जेंकिंस आल्सो वी हैव दैट. अगर मान लो मेरे को मेरा जॉब जेंकिंस के सर्वर पे नहीं रन करा के किसी और सिस्टम पे रन करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर जेनरिक यूज कर रहा हूँ, पाइपलाइन नहीं जॉब यूज कर रहा, तो मैं क्या करूंगा? एक स्लेव नोड बनाऊंगा, है ना. अब मैं अपने जॉब को कहाँ पे एग्जीक्यूट कराऊंगा? किसी स्लेव मशीन पे. तो मेरा मान लो जेंकिंस जो सर्वर है, राइट, वो एक Ubuntu system है. I want to attach a right Windows, right, slave. So I can attach that, right, so that I can run certain jobs which are Windows specific in Windows machine. Okay. And if I'm using pipeline job, which is very popular, तो pipeline में क्या होता है? We can define agents. तो एजेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे कंटेनर में रन करना है, इमेज में कोई, राइट, डॉकर की इमेज में रन करना है, तो वी कैन डिफाइन एन एजेंट एज अ डॉकर, राइट, एंड प्रोवाइड दैट इमेज इन विच आई वांट टू रन माय जॉब. ओके. ओके. So similar stuff, right? They are very comparable, right? That you will see basically. तो आपने आपने जरूर वो देखा होगा, तो उसमें अगर आप करने जाओगे ना, जब आप जो ये पाइपलाइन क्रिएट कर रहे होगे, राइट, तो उसमें पूछेगा किस इमेज पे रन करना है आपको, हाँ वही एक्चुअली राइट. मैं हाँ
मैं वहीं पे स्टक हो गई थी। मुझे मतलब वो पता चला कि वो लाइनक्स या उस सिस्टम पे ECS का भी ऑप्शन अवेलेबल था कि कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। Correct. Yeah. तो Good. Okay. Now we should go ahead. Now we have certain you can say understanding about what actually build systems are, right? And also Jenkins we also understand why it uses servlet approach. Now it's time to do the installation of Jenkins and see how we can install Jenkins. So what I will do, I will log into my, I cannot pull it down today. I don't know, it is just stuck. Okay, this one. Okay, I'm just logging into my server, and I will create a new instance for installation of Jenkins. Again, obviously, as you said, it is a platform independent. I can do Jenkins installation anywhere. True or correct statement made by me? Yes. Okay. yes. So we can use any variant, of Unix also. So I would suggest for learning, so that you don't get blocked because of resources. We are going to use free tier only, but use generally Ubuntu. ठीक है, इंस्टॉलेशन हर किसी में हो जाएगा। मैं आपको इंस्टॉलेशन के बता दूंगा कहाँ से क्या होता है। आप रेड हैट पे भी इंस्टॉलेशन करके रख सकते हो। बट प्रॉब्लम विद AWS के T2 माइक्रो इंस्टेंस के साथ ये है कि आपके क्या कितने में मिल रहा है रिसोर्सेस, 1 GB रैम और 1 CPU, है ना, उतना ही है। उस पर आपको काम चलाना है, उस पर आपको बहुत सारे जॉब रन करने हैं, तो ऑब्वियसली वो ओवरवेलम होने के चांसेस हैं। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस रेड हैट ज़्यादा इफेक्ट होता है और यूबुंटू कम इफेक्ट होता है, राइट। इन मे बी द सिस्टम यू कैन से ना, जो इसकी जो इमेज जो बनाया है उसके अंदर जो हार्डनिंग है, आई थिंक यूबुंटू की ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू। बट इंस्टॉलेशन जॉब रन सेम एग्जीक्यूशन दोनों में होता है, सब किया है। बट क्या होता है अगर आप जेंकिंस सर्वर को कंटिन्यूसली अप रख रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो AWS फ्री टायर में क्या करता है, आपके क्रेडिट काटते जाता है, राइट। तो आपको जो शेयर है CPU का, राइट, और रैम का, वो कम हो जाता है। एंड उसके कारण क्या होता है आपको जो जॉब रन करते हो उसमें इफेक्ट हो जाता है। तो ये आपको दोनों में फील होगा, रेड हैट में, बट रेड हैट में ज्यादा होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ, राइट। सो उसको आप जुडिशियसली राइट चूज करना। we can use any installation, so there is no challenge. oh come on, मैंने कल एक प्रोविजनिंग लैब किया था, भूल गया मैंने। सारे सिस्टम्स रनिंग में पड़े होंगे, 6 सिस्टम रनिंग में। देखो कल हम लोगों ने एनसिबल से स्पन किया था बहुत सारे मशीन, ये प्रोविजनिंग का लैब में। लेट मी शट टर्मिनेट ऑल दोस। तो हम इसमें से एक होस्ट यूज कर, बट लेट मी टर्मिनेट, हम फ्रेश करेंगे, क्यों यूज करें। let me terminate these instances first. Okay. And I need Ansible and Ansible master both, right? And I need Ubuntu web. I don't need this Ubuntu web. I will also terminate this. Okay, so they are all getting terminated, and we are going to launch a new machine now. Okay, so I am going to launch, and we will installation after, right, making. So do you want to take me which machine? Ubuntu, Red Hat, Amazon AMI, क्या चाहिए, क्या यूज करूं मैं? Red Hat. Ubuntu. ठीक है, मतलब विशाल ने रेड हैट बोला, ठीक है, तो विशाल आप रेड हैट में ट्राई करोगे, लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम किस में? जॉब प्रोसेसिंग के टाइम पे, आफ्टर राइट मे बी 2-3 days when your credits are lost, but Ubuntu is far much, right, मतलब in terms of AWS image I would say। Okay. बट अगर आप देखोगे, I don't I know why विशाल is right very reluctant on Red Hat, because जो CentOS हैं ये प्रोडक्शन क्लास मशीन्स हैं, right, CentOS, Yes. Red Hat 8, and most of the organization you will see, right, they would be using this, but remember in AWS, right, people would be more using Ubuntu। उल्टा ट्रेंड है वहाँ पे, ठीक है। Yes. तो वहाँ पे आपको Ubuntu ज्यादा दिखेगा, राइट, क्योंकि Ubuntu वहाँ पे ज्यादा अच्छा है। तो it's your choice, so I say I am choosing Ubuntu, right।
just because I have to run many jobs, I don't want to fall into that. Ubuntu में भी आएगा, you will definitely see that, but मैं Ubuntu ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं सिंपल इसको लॉन्च करके छोड़ दूंगा और हम इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे. Configure, review and launch, and I will use my key DevOps learning launch instance. ठीक है, लॉन्च होते रहने दो. Meanwhile, Jenkins का अपना इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम Jenkins IO पे बिलीव करेंगे, ठीक है. बट अगर चैलेंज आएगा तो राइट वी गो टू ब्लॉग्स एंड ऑल दैट, राइट. और आइडेंटिफाई, तो Jenkins IO में दिया हुआ अच्छा खासा इंस्ट्रक्शन दिया, उसको फॉलो करेंगे, सब कुछ इंस्टॉलेशन होगा. बट आई हैव टू राइट बेसिकली गाइड यू ऑन सर्टेन. सो इन डॉक्यूमेंटेशन ये इंस्टॉलिंग मार्केट प्लेस में अवेलेबल नहीं होगा जेनकिंस? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, सब जगह मिलेगा, लेकिन आपको यहीं पे इसका मार्केट प्लेस मिल जाएगा, ठीक है, जेंकिंस के आयो में, ठीक है. मार्केट प्लेस यू आर सेइंग राइट इन टर्म्स ऑफ राइट एक अदर रेपो बेस्ड इंस्टॉलेशन, राइट, सर्वर पे हमने क्या, तो वही है, वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए होंगे और कुछ नहीं, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो इंस्टॉलिंग जेंकिंस करके एक है, राइट, यूजर गाइड, इस पे क्लिक करना, आप यू विल जंप इनटू दिस पेज. एंड यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म के लिए डॉकर, कुबरनेटिस, राइट, कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. This is the page, right, the right page, right, where you can write download. For example, अगर मैं एक बहुत ही राइट प्लेन इंस्टॉलेशन रखना चाहता हूँ वॉर फाइल बेस्ड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपाचे टॉमकैट बेस्ड इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ. मैं अपाचे टॉमकैट मशीन पे डालूंगा और वॉर फाइल्स यहाँ पे जाऊंगा वॉर पे, और वॉर पे डाउनलोड कर वॉर फाइल डाउनलोड कर लूंगा, और यहाँ पे जैसे जावा माइनस जार जेंकिंस वॉर है वैसे भी रन कर सकता हूँ विंडोज में ये, और मैं वेब एप्स फोल्डर पे जाके Apache Tomcat के डाल के भी रन कर सकता हूँ. So there are various way of installing, right? This is a very you can say different way, or you can say, right, generally organization will not prefer this, right, because it is a process based execution, right. मैं चाहता हूँ manage way execution हो, सर्विस मेंटेन हो, राइट. तो आप ऐसे भी रन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये वॉर फाइल बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है. तो guys look into this, right, this stuff, right, these are also important. ऐसा नहीं है कि नहीं, जानना नहीं चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है. और अगर मैं लिनक्स पे जाऊं तो यहाँ पे डेबियन, यूबंटू, फेडोरा, रेड हैट सबके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है. अगर मुझे रेड हैट में इंस्टॉल करना है तो आई विल क्लिक हियर, राइट, एंड आई विल गेट द राइट इंस्टॉलेशन, राइट, कमांड्स, राइट, हाउ आई कैन राइट इंस्टॉल माय राइट सिस्टम. सो ये पूरा का पूरा जो पेज है फेडोरा, रेड हैट सबके लिए राइट दिया हुआ है. ये सेंटो रेड हैट सेंटोस के लिए दिया है. पहले डब्ल्यू गेट करो, जेंकिंस रेपो लेकर आओ, राइट, आईओ की डालो, यम अपग्रेड मारो एंड इंस्टॉल जेंकिंस, राइट, जावा जो उसको चाहिए, एंड राइट डेमन रिलोड करो, आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो सिमिलरली आपको सर्विस स्टार्ट करना है तो आप ऐसे करते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है. ऊपर में आपको यूबुंटू का भी दिया होगा, ठीक है. दिस इज सर एक जस्ट चीज इन्फॉर्मेशन मैं मतलब पता करना चाहता हूँ. मैं एक्चुअली मतलब ये जैसे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ये हमको एक ग्राफिकल डैशबोर्ड ही देने वाला, राइट? ऑब्वियसली, मतलब यूआई, नॉट ग्राफिकल डैशबोर्ड, राइट, यूआई. यस यस यूआई. हाँ. सो मैं एक पोर्टल यूज करता हूँ जैसे क्लाउड जीपी है वो, यू कैन एंटर इन यूआरएल क्लाउड जीपी. सो वहाँ पर भी क्लाउड मतलब ये जेनकिंस का मार्केट प्लेस में अवेलेबल है, तो वो भी यूआई ही प्रोवाइड करता है, तो वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? हाँ, कर सकते हैं. तुम ये बोल रहे हो क्लाउड जेपी, राइट, जिफी, JIFFI, जिफी, ओके, सुना है इसके बारे में मैंने. हाँ, JIFFY, राइट. यस. तो इसमें मतलब आपने फ्री किया है कि इस पे फ्री टायर पे लिया है कि कैसे लिया है? हाँ, फ्री पे ही है. ओके, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं अगर फ्री है. और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ? बहुत अच्छा है सर. ये मतलब बेसिकली जेलास्टिक पे बेस्ड है. जेलास्टिक तो इनने इसका वाइट लेवल लिया है. ओके, सेम एज वी कैन आल्सो साइन इन टू जेलास्टिक. ओके. सो इज अवेलेबल इन यूएसए, इंडिया एंड जर्मनी. लेट मी, सो इसमें मेरे को प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होगा. इज इट लाइक जावा पे है, ठीक है. हाँ, यस. और फिर यहाँ पे वेयर आई कैन सी राइट माय टूल दैट आई वांट टू यूज, फॉर नो, एग्जांपल जेंकिंस. फर्स्टली वी कैन डायरेक्टली साइन इन टू दैट पोर्टल. Okay, so I have to sign in first and then right I have to हाँ, वी कैन इंस्टॉल फ्रॉम मार्केट प्लेस डायरेक्टली. ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट एट जस्ट ₹54 मंथ, 14 डेज ऊपर है ना फ्री साइन अप. 14 डेज का फ्री ट्रायल. ठीक है.
After that it charge you or what? नो इट विल नॉट चार्ज यू। अगर सपोर्ट पे जैसे हमने इनको टिकट ओपन किया या कुछ भी किया तो बेस्ड ऑन द मतलब प्रोडक्शन है कि अगर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो चार्जेबल होगा। ओके टेस्ट के लिए तो वो ओके। और ये जो सर्वर जो भी है वो वही मेंटेन करते हैं, राइट? वी डोंट हैव, वी जस्ट गेट एन यूआई, राइट? यस यस Guys, you can try that also, right? But remember, for right integration point of view, we need to log in into server and right do certain key sharing, right? I think that would be restricted. Can I log into the Jenkins server they are providing? मैंने तो सर वो साइन इन करके ही किया था बट ज्यादा यूज नहीं किया उसको भी। ओके, तो इसमें तो वो एक मेरे को जो चैलेंज दिख रहा है, बट डू ट्राई गाइस, ठीक है, देखना। बट चैलेंज क्या आएगा, अभी हम लोग को क्या करना है, जेंकिंस को इंटीग्रेट करना है, ठीक है? अभी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी उन लोग ने जो जेंकिंस सर्वर यूज किया होगा, राइट, उसका जो बैकग्राउंड पीछे में जो उसका जो जेंकिंस होम डायरेक्टरी है, राइट, जहाँ पे मेरे सारे जेंकिंस के कॉन्फ़िगरेशन है, मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे को बहुत ही लिमिटेड राइट एक्सेस देगा। मेरे को लगता है सिर्फ फ्रंट एंड का एक्सेस दे रहा है, राइट? यस यस और बैकएंड सर्वर का नहीं दे रहा है। तो बैकएंड सर्वर में आई विल बी लिमिटेड कि मुझे जो जो चीजें कॉन्फ़िगर करनी है या चेंज करना है, राइट, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट, अगर मेरा खुद का अपना सर्वर नहीं है तो। बट अगेन इट इज गुड थिंग, राइट, कि आप उस पर प्ले अराउंड कर सकते हैं यूआई पे कुछ चीजें बना के। बट यू विल मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरिंग दैम, राइट, फ्रॉम द बैक एंड। आपको कुछ करना है तो वो चीज आप ब्लॉक हो जाओगे थोड़ा, ठीक है? दैट व्हाट आई फोरसी, बट आई विल आल्सो एक्सप्लोर दिस, ठीक है? समथिंग इंटरेस्टिंग क्लाउड जेफी, गुड। एंड सेम थिंग इज जेलास्टिक आल्सो। जेलास्टिक भी पूरा सेम है, ये वाइट लेवल है जेलास्टिक। ओके, इट इज व्हाट, जे JELAS। इलास्टिक, ओके, जे हाँ इलास्टिक, elastic। जे इलास्टिक। So what is this? There is a powerful tool that does not just manage and automate cloud service, it manages them all for you to use GUI panels. Okay. It's a multi-cloud platform service. WordPress hosting, Kubernetes hosting, database clusters, private multi-cloud platform as a service, simplify cloud infrastructure management. Okay, so they again, right, is some tool, right, basically, right, they are providing Yes, basically. Good. So it is again an open source or licensed product? it's licensed product. Paper using public cloud revenue sharing partners. Yeah, it would be a licensed one. Okay, can be evaluated. Okay, good. Thank you. Now let's come to right our need, right, what we were doing. So हमने ने कहाँ खोला था? तो ये ना, ये जब नीचे नहीं आता तो we are actually stuck. मैं स्क्रॉल भी नहीं कर सकता, ये ब्लॉक हो गया हूँ मैं इस यूआई पे, ठीक है? ये वाला था हमारा। हाँ, तो अभी अगर आप ये देखोगे Ubuntu के इंस्टॉलेशन स्टेप्स में, तो इसमें भी क्या है, राइट, यू कैन राइट डाउनलोड दिस IO की, राइट, sudo apt की add, and then right you can simply right add it to the right servers Jenkins list, right, etc apt में डाल दिया and update करके इंस्टॉल कर दिया Jenkins, right? तो ये अगर आप ये करोगे तो Jenkins as a service आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा, right? And they have some weekly release, right? So generally people will go for LTS, right, long term support or stable releases, right, rather than right beta releases. And obviously it is dependent upon Java, so you need the prerequisite is that you should install Java. So these are the command, right, to install, right, in Java. So generally we are using JDK 8, so we will be using right OpenJDK 8 JDK installation, right, in our system, and we will check it, and then right we will install right our you can say uh, server, right, Jenkins server. So these are various way, right, you can install. Now remember it is written Debian, right, and for Ubuntu we'll need right Ubuntu. So there are two different versions. So that is here it is segregated as Debian. So Debian एक ग्रुप बना दिया है, बट कई जगह पे आप इंस्टॉलेशन करोगे तो वहाँ पे आपको Ubuntu का ही यूज करना पड़ेगा, Debian का नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये भी दिमाग में आपको रखना है, राइट, एट द टर्म ऑफ इंस्टॉलेशन। सब जगह पे Debian और Ubuntu को भी अलग किया हुआ है, कई जगह पे Debian Ubuntu को
जोड़ के रखा है, ठीक है. So we can start installing after logging in and see right how our UI comes up. So हम अपने इंस्टेंस पे जाते हैं, ये हमारा व्यू इंस्टेंस में जाते हैं, लॉगिन करते हैं. So where is one, this one, right? मैं इसको नाम देता हूँ Jenkins. Okay, and I need IP of this machine to log in. This is the IP. Copied. Go here. Okay. So I will exit. So this is, I'm already exited. So I will do Control R SSH. Okay. DevOps learning. Let me put it here. My UP. तो हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं और पहले देख लेते हैं हमारे पास राइट, ठीक है, इट्स ऑल गुड राइट. यहाँ पे अभी हम जेंकिंस इंस्टॉलेशन स्टेप फॉलो करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें जावा इंस्टॉल करना है ना. तो पहले हम जावा इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेंगे इसके. तो पहले अपने को अपडेट करना है. सो लेट्स अपडेट दिस. ठीक है, ये हो गया. अभी हमें 8 JDK यूज करना है अपने लिए, ठीक है. हम 11 पे नहीं कर रहे हैं. Let it get installed. And Deepak, Winstone and JT, these are the servlet program name, right? Yeah, name of the servlets, okay, that Jenkins uses. Okay, now अभी हमारा क्या हुआ, जावा इंस्टॉल किया. तो जावा वर्जन देख लेते हैं. So it is open JDK version this, right? It is in mix mode, or we can also check whether which path, right? It is so sudo. Okay, it is update alternatives, I think. Update sudo update alternatives. Yeah, alternatives dash config Java. So see, currently if you see, right, this is only one alternative in link group, and basically it is using this, right, user bin Java. Means basically it is using JRE, right? If I want to point it to JDK, right, then I have to add to my update alternatives config, right? So currently it is showing there is only one, right, Java, and it is pointing to JRE bin Java, but it is in mixed mode. So my JDK will also work. But if I want right, strictly pointing to right JDK, then there is one thing that I can show you. So इसको ही बंद करते हैं. इसको मैं देखूंगा दोनों को बाद में. So I have my paste pin. Okay, and v0. This one my paste pin URL. यहाँ पे मैं कमांड है जो रेड हैट के लिए मैंने डाला है, वही हम कमांड राइट कॉन्फ़िग ऐड करने के लिए, मतलब एक शॉर्टकट, नया शॉर्टकट बनाने के लिए डालेंगे. सो इट इज रिलेटेड टू माय. So this is the right. See, in Red Hat we use alternatives, right, rather than update alternatives. But in Ubuntu we have update alternatives. I am interested in this part. So I'm going to write add one more entry, right? There is only one entry, so therefore it is not showing us, right, where to point. So I will use this command update alternatives.
and then I will put here this, and I'm just creating another soft link, right, to point to another Java, and this time I will use the path where the JDK Java is, right? JDK and JRE में पता है difference क्या है? Anyone? Yes. JDK means development compilation and JRE means runtime environment. करेक्ट. सो ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्शन पे अपना कोई भी जावा का कोड या कुछ भी लेके जाएंगे, राइट, तो उसको डेवलपमेंट तो चाहिए नहीं है, वो तो ऑलरेडी, राइट, एक सोर्स क्या एग्जीक्यूटेबल है, राइट. तो उसको उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रन टाइम एनवायरनमेंट है. तो इसलिए प्रोडक्शन सिस्टम में वी डोंट हैव व्हाट, बेसिकली you can say JDK installed. So JDK जनरली आपके वर्क स्टेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे use होता है. So obviously अगर आप डिफरेंस देखोगे तो JRE would be lightweight than, right, the JDK. So obviously it's a development kit and JRE is a runtime environment. तो अभी मेरा जो JDK का जो पाथ है वो कहाँ पे, AMD 64 के JRE के अंदर नहीं, सीधा बिन के अंदर. तो बिन के अंदर भी एक जावा है, ये जावा जो है ये JDK का जावा है, ठीक है. और वो जो जावा है, राइट, वो क्या है, JRE का जावा है. तो मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया, ठीक है. तो अपडेट अल्टरनेटिव्स आ गया. अभी मैं वही कॉन्फिग जावा वाला कमांड रन करूंगा, तो मुझे यहाँ पे देखो चॉइसेस आ गए. एक है ऑटो मोड में, जो कि मैंने अभी जब ऐड किया तो बिन जावा पे पॉइंट कर दिया, तो एज पर, राइट, इट विल यूज. और आई कैन स्ट्रिक्टली ऐड टू मैनुअल मोड कि भाई नहीं यही बिन जावा यूज करो. तो इफ आई वांट टू स्विच टू JRE आई कैन चूज द नंबर. अगर मैं 2 चूज करूंगा तो ये जो देख रहे हो एक प्लस साइन 2 पे आ जाएगा, मतलब वो JRE यूज करेगा मैनुअल मोड. So now we are right added, right, bin Java, right, and therefore, right, it is now using basically, right, JDK. Exactly, I am now confirmed it is using JDK Java. So And what is the auto mode, manual mode? see, auto means so whenever, right, you run any program, right, it will use which one, Java one, right? You don't have to define or say, right, कि भाई मेरे को मेरा JDK का Java यूज करो. अगर मैनुअल मोड है तो अगर मैनुअल मोड में डाला हुआ है तो ऑब्वियसली यू हैड मेड कि भाई मेरा जो जावा है वो JDK या JRE यूज करो. और मिक्स मोड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जावा जो भी पॉइंट करो वो उस जावा, कोई भी जावा जो मिल जाए उसको वो यूज कर लेगा, राइट, JDK हो या JRE हो. So manual mode is what you had, right, said that कि भाई ये चीज होना चाहिए, ये वाला जावा यूज करो. दैट इज व्हाट द मैनुअल, राइट, मैंने पॉइंट किया. ऑटो मोड में क्या है, कुछ भी हो जाए, कौन सा यूज करो, जावा यूज करो. मतलब ऑटो डायरेक्ट होगा कहाँ पे, जो आपने सेट किया है. तो एक स्टार होता है, एक प्लस होता है, ठीक है. तो स्टार हमेशा ऑटो मोड में रहेगा और प्लस आपका कहाँ रहेगा, मैनुअल मोड पे रहेगा, ठीक है. सी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना ध्यान देना ये पाथ किस पे है जो आप यूज कर रहे हो. अगर Yes. बिन जावा के अंदर है तो आप JDK यूज कर रहे हो डायरेक्टली. अगर JRE बिन जावा के अंदर है तो आप क्या यूज कर रहे हो, JRE का जावा यूज कर रहे हो, ठीक है. प्रोडक्शन में जनरली ये वाला पाथ कॉन्फ़िगर होता है, JRE बिन जावा. बट आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप कंसिडर ये करते हो. और दोनों जावा एक ही हैं, ठीक है. अगर देखा जाए बिन जावा ये एक ही है, बट डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं ये पाथ उठाऊं और इसको ls-ltr करूं, जावा वर्जन बाद में देखेंगे, पहले ls-ltr करके इसको देखते हैं. देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, जावा सी, है ना, ये सब चीजें. अब मैं JRE में जाऊंगा, JRE के बिन जावा में यू विल सी द लिमिटेशंस. यहाँ पे क्या है, गिन के एक जावा है, की टूल है, कुछ नहीं है. बट यहाँ पे देखो JDK में बहुत सारे चीजें हैं, राइट, रिलेटेड टू योर, राइट, डेवलपमेंट. तो देयरफॉर, राइट, JDK कम्स विद लॉट ऑफ, सो आई पॉइंटेड टू दैट पाथ. अगर मान लो मुझे कुछ जावा सी यूज करना है तो ऑब्वियसली मैं, राइट, JDK वाले पाथ पे पॉइंटेड हूँ, तो वहां से रिफर करके करेगा कोई भी चीज, ठीक है. ओके, नाउ माय जावा वर्जन वुड बी सेम, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट मैंने इंटरनली बैकग्राउंड पे, राइट, वो पॉइंटर चेंज कर दिया, ठीक है. तो अगर देखोगे अभी भी आपको यही शो करेगा, राइट, ओपन JDK मिक्स मोड, राइट, एंड दैट्स व्हाट, राइट, वी आर गुड. नाउ लेट्स डू द इंस्टॉलेशन जेंकिंस का. तो ऊपर चलते हैं, ये सारे कमांड अपने को रन करने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले है wget, ये रेपो हमें apt की फाइल पे लेके आ जानी है. कंट्रोल C, होपफुली wget होगा यहाँ पे. ubuntu है तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन रहता है. तो इसने बोला ओके, मतलब सही है. अगर ओके आया तो इसका मतलब
सही है। उसके बाद हमने एक एंट्री डाली किसकी, डेबियन स्टेबल, जेंकिंस का डेबियन स्टेबल वर्जन उठाने के लिए, ठीक है। तो हमने ये उठाया और वो किस फाइल में राइट करा, etc apt सोर्स लिस्ट में डाल रहा है, जेंकिंस लिस्ट करके एक एंट्री बना रहा है। ये रन कर दिया, ये भी हमारा रन हो गया, ठीक है। नाउ कम्स अपडेट, सिंस आई हैव एडेड रेपो, तो मेरे को अब अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद इंस्टॉल करना। And then update install Jenkins. Let it get installed. And after that, right, Jenkins default port is what? 8080. So हमें 8080 पे उसको ब्राउज करना पड़ेगा और 8080 को वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा Jenkins इंस्टॉल हो गया है, बट अगर आप sudo system ctl करके देखोगे तो system ctl status Jenkins, तो ये क्या है, रन भी कर दिया इसने, ठीक है। वी कैन स्टार्ट स्टॉप यूजिंग व्हाट, दिस सिस्टम सीटीएल। अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ होता सर्विस तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, स्टार्ट, ठीक है। अगर इसको स्टॉप करना है तो मैं लिखता क्या, स्टॉप। अगर मुझे रीस्टार्ट करना है तो मैं क्या लिखता, रीस्टार्ट, राइट। दिस आर द कमांड्स, राइट, टू राइट स्टार्ट दिस सर्विस। सो ये एक तरह का राइट मैनेज्ड राइट वे है। अगर आपने वार फाइल डाउनलोड करके, सिंपल वार फाइल डाउनलोड करके जेंकिंस का और जावा माइनस जार करके रन किया होता तो आपको वो प्रोसेस, आपका सिस्टम डाउन हो रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा, राइट। और इन दैट वे दैट इज नॉट दैट मैनेजेबल। नाउ अनदर थिंग, राइट, जेंकिंस तो इंस्टॉल हो गया, राइट, इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मिल जाते हैं कि किस पोर्ट पे रन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट, इसका HTTP पोर्ट क्या है, 80 है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, राइट, और लॉग कहाँ पे है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। देखो जेंकिंस होम डायरेक्टरी इज व्हाट, var live jenkins, ठीक है। ये आपका जेंकिंस का होम डायरेक्टरी है आफ्टर इंस्टॉलेशन। दूसरा, इसका लॉग कहाँ जनरेट होगा, जो भी अगर जेंकिंस लॉग जनरेट करेगा, var log jenkins के अंदर jenkins.log फाइल में आपको जेंकिंस रिलेटेड जो भी इशू है वो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड यूजर शेयर जेंकिंस, आपका जो वॉर रन हो रहा है वो यहाँ पे है, यूजर शेयर जेंकिंस वॉर पे उसने ला के रखा है, ठीक है। एंड इट इज रनिंग ऑन HTTP 8080. So this is how, right, basically Jenkins has been, right, initiated for you. Now let's access it and see, right, what all we need to do. But before that, few things. जब Jenkins install होता है तो एक यूजर बनता है, राइट, यूनिक सिस्टम पे Jenkins नाम का। तो आप कहाँ चेक कर सकते हो, etc पासवर्ड, यहाँ पे देखो ये Jenkins। अगर यही आपने रेड हैट में इंस्टॉल किया होता, राइट, Jenkins इसी तरीके से इंस्टॉल होगा जो कमांड है, राइट। बट आप एक चीज देखोगे वहां पे, अगर ग्रैब करोगे Jenkins को तो यहाँ बिन बैश की जगह बिन फॉल्स होगा, वहां पे क्या होगा, बिन फॉल्स, शेल चाहिए। राइट। रीजन क्या है बिन फॉल्स करने का, It will not get executable shell. या It will not get executable shell there. yeah, execute। तो as such in that system how we want to, if I want to log in and get a shell तो कैसे करेंगे विशाल? उसको shell assign करना पड़ेगा। करेक्ट। कौन सा Shell फ्लैग है, True कौन सा फ्लैग यूज होगा? से भी कर सकते हैं, और अगर शेल ही असाइन करने को तो लिनक्स में हम chss नाम का भी एक कमांड है, उसके थ्रू भी हम जेंकिंस को बिन बैश का शेल असाइन कर सकते हैं। So there is another way, right, you are saying that's also true. So अभी जैसे मैं इस पे Jenkins यूजर पे स्विच करना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं, sudo नहीं su Jenkins, मैंने ये लिखा तो मैं स्विच कर सकता हूँ Jenkins यूजर पे, राइट। लेकिन इसमें और इस कमांड में क्या फर्क है, अगर मैं su डैश डाल दूं यहाँ पे? When you log in with Jenkins by using su-jenkins, so it will at that time it will directly jump, it will create its own home directory and it will log in into that. So already home directory is created, right? This is your home directory. If you see, सर right, अगर ये जो है डैश ना, के हाँ, अगर डैश के साथ में लॉगिन करेंगे
तो वो होम डायरेक्टरी पे जंप करेगा। लेकिन अगर Correct. मैं यूजर नेम भी यूज करूंगा तो जिस डायरेक्टरी पे हूँ, मतलब उसका है वेयर लिव जेनकिंस, या जिस डायरेक्टरी से कर रहा हूँ उस डायरेक्टरी पे जंप। बिल्कुल। तो मतलब अगर मैं एसयू डैश कर रहा हूँ तो मैं मेरे होम डायरेक्टरी पे लॉगिन करूंगा। अगर होम डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है तो जैसा विशाल ने बोला वो बना देगा। ठीक है, करेक्ट, दैट इज द स्टेटमेंट। नाउ इफ आई डू दिस राइट, आई स्विच टू जेंकिंस यूजर एंड माय पाथ इज वेयर लिव जेंकिंस। ठीक है, अभी मैं यहाँ से वापस से बाहर निकल जाता हूँ इस जेंकिंस यूजर से। ठीक है, और विदाउट डैश रन करता हूँ। तो मैं अभी करंट कौन से पाथ में हूँ? मैं यूबुंटू के होम डायरेक्टरी पे हूँ, राइट। और मैं यहाँ से स्विच कर रहा हूँ जेंकिंस में। मैं जेंकिंस यूजर पे चला गया, लेकिन मेरा पाथ क्या है? होम यूबुंटू, जो जिस पाथ पे मैं था, है ना। तो डैश का फायदा ये है कि आप यूजर के होम डायरेक्टरी पे लैंड अप करोगे। ठीक है, मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ। अभी यही कमांड जो मैंने ऊपर में रन किया, ये अगर मैं यूनिक्स रेड हैट के इंस्टॉलेशन के बाद रन करूँ तो मैं जेंकिंस यूजर पे मूव नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उसके पास शेल नहीं है, विन फॉल्स है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें एक फ्लैग है -s, आई विल असाइन अ शेल यूजिंग -s फ्लैग एंड बिन बैश करके मैं रन कर सकता हूँ वहाँ पे, राइट। रेड हैट के केस में अगर मुझे स्विच करना है तो मैं उसको एक शेल दे रहा हूँ जो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे है, और मैं उससे स्विच करूंगा। तो अभी देखो मैंने किया, मैं स्विच हुआ। अभी मैंने बिन बैश शेल पास किया, उसके बेसिस पे मैं उस शेल पे चला गया। ठीक है, सो -s फ्लैग कैन बी यूज इन दैट केस। नाउ Is it permanent or temporary? टेम्पररी। ओके, सो ऑब्वियसली आपका बिन फॉल्स ही रखना है, आपको सिक्योर रखना है। रीजन यही है कि आपको शेल नहीं देना, राइट। बट द थिंग्स, राइट, बेसिकली इज द रीजन। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? आपको परमानेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? परमानेंट करना है तो सीधा ईटीसी पासवर्ड में एज अ राइट एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करो, मतलब सिस्टम पे, और ईटीसी पासवर्ड में जाके जहाँ पे बिन फॉल्स है वहाँ पे बिन बैश कर दो, तो आपको बस हमेशा के लिए वो सेट हो जाएगा। ठीक है। Yes, but generally ये जो है हमारा Jenkins, it is a kind of web server. So web server को तो हम HTTP से एक्सेस करते हैं, तो इसको बिन बैश देने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो यू बहुत आर राइट। बहुत बहुत ज्यादा मतलब बनता है विशाल। फॉर एग्जाम्पल, आप पासवर्ड भूल गए, यूआई में लॉगिन करना था, आपने पासवर्ड सेट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड भूल गए, आप कैसे उसको ठीक करोगे? हाँ, शेल के थ्रू। तो आपको चाहिए बैकएंड लॉगिन, राइट। उस यूजर पे जाके कौन सा फाइल, ये config.xml फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आगे कुछ कीड़े करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिसिटी फॉल्स करना पड़ेगा, है ना, कि विदाउट राइट ऑथेंटिक आप लॉगिन कर पाओ। तो इन सच केसेस देयर आर केसेस, राइट, वेयर यू विल नीड दैट एक्सेस, राइट। तो ये ऑथेंटिसिटी सिर्फ अपने लिए रहेगी या बाकी सबके लिए? सबके लिए, मतलब फॉर अ टाइमिंग वो सबके लिए हटा देगा। एनी वन कैन राइट लॉग इन, ओके। बट यू वांट टू राइट, अभी क्या सब लोग लॉगिन कर ही नहीं पा रहे, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड चला गया और एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जिनको ब्लॉक करना है, आप ऐड ही नहीं कर पा रहे नए यूजर को, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो config.xml फाइल है, इसमें ये दो कीज, एक यूज सिक्योरिटी, इसको क्या करना पड़ता है? फॉल्स। और दूसरा ये ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे जो डिनाई एनोनिमस रीड एक्सेस है, राइट, इसको भी क्या करना पड़ता है? फॉल्स। once you do that you will able to access and then you can either right create a new admin user, राइट, उसका पासवर्ड वहां पे जाके यूआई के थ्रू करके, तो यहाँ पे वापस एंट्री सही आ जाएगी। वहां से आप जाके इनेबल कर सकते हो यूज सिक्योरिटी ब्राउजर से, तो वापस ये अपडेट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आप जो भी चेंज राइट फ्रंट एंड में करते हो वो config.xml में आके रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, रिलेटेड टू द जेंकिंस कॉन्फ़िगरेशन, आइदर इट इज अ सिक्योरिटी और इज अ टूल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Yes, Deepak. एंड दिस इज द प्लेस राइट वेयर यू कैन प्ले अराउंड। आपको वर्क स्पेस डायरेक्टरी चेंज करनी है, बिल्ड डायरेक्टरी चेंज करनी है, राइट, तो आप यहाँ पे अपना डिफाइन भी कर सकते हो अगर आपको, ठीक है। ये मैंने बाहर आया तो ये इसलिए मेरे को यहाँ पे लॉगिन करके आपको बताना था। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बनेंगी, राइट, हमारा वर्क स्पेस डायरेक्टरी बनेगा जब हम जॉब रन करेंगे। अभी हम लोग एक्सेस करके देखते हैं। हमने यहाँ पे सर्विस तो स्टार्ट कर दी है, तो ऑब्वियसली मैं अपने इंस्टेंस में जाऊंगा, बट ये मुझे जाने नहीं दे रहा। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? ये जूम का इशू है ये। ओके, वेयर इज माय जेंकिंस? This one here, I will go to my security group of this.
और यहाँ पे मैं 8080 पोर्ट अभी इनेबल करूंगा। ठीक है, मैं अपने आप को सिर्फ एक्सेस दे सकता हूँ मान लो इस आईपी को, बट अगली बार जब मेरा सिस्टम रिबूट होगा तो मेरा पब्लिक आईपी चेंज होगा, तो ऑब्वियसली राइट फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो you can either get 0.0, right? It's fine. So if I save rules, okay, it's all good. Now I will go to my instance. Copy the IP and we'll go to this new tab. And I will open here our port 8080. So very first time, right, it will ask you, right, to unlock, right, Jenkins using, right, this basic, right, first time password, so that it understand that you are the owner, basically, right. So ये जो path है, इस path से हमें password copy, मैं इसको ले जाऊंगा अपने सर्वर पे जहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, यहाँ पे मैं कैट कर दूंगा। सिंस मैं जेंकिन से लॉगिन हूँ तो मेरे को राइट नॉर्मल कैट करने से भी काम चल जाएगा, बाहर से भी तो चल जाएगा, ठीक है। नाउ हियर दिस इज द फर्स्ट टाइम पासवर्ड, आई विल कॉपी इट and paste it here. Then it will ask me right to install plugins and all that. तो मैं बस जो डिफॉल्ट वो देगा मैं वो वाला यूज करूंगा, मतलब इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स। I can choose my plugins also, but it will give me right all the plugins that I need, right? And later on I can install my plugins also, right? Whatever I want as per my need of the project। जब हम करेंगे तो हमको करना ही है कुछ plugins इंस्टॉल। तो अभी इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स मैंने क्लिक किया। Now it start right basically installing the basic plugins that is required। ओके, नाउ यूजर नेम हम अपना ऐसा रखेंगे जो हमें याद रहे, ठीक है। अगर भूल जाओगे तो मैंने ट्रिक तो बता ही दिया है, ठीक है। मैं बेसिक पासवर्ड ही रख रहा हूँ, ये कुछ भी डाल दो। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, नाउ ये इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन जेंकिंस यूआरएल ये भी कॉन्फ़िगरेबल है, कभी भी आप चेंज कर सकते हो। जनरली हमारा जेंकिंस स्टैटिक सर्वर पे रहेगा, हमारे केस में हम AWS पे कर रहे हैं तो हमारा आईपी पब्लिक आईपी चेंज होते रहेगा। तो अगर मैं अभी इसको ये भी रहने दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जेंकिंस के कॉन्फ़िगरेशन से इसको कभी भी जाके चेंज कर सकता हूँ, राइट। ये इसका यूज क्या होता है बेसिकली स्क्रिप्टेड एग्जीक्यूशन के टाइम पे, राइट, जो जेंकिंस यूआरएल होता है, राइट, वो एज अ वेरिएबल रहता है और उस वेरिएबल से ये फेच करता है वैल्यू, राइट, जो कॉन्फ़िगर्ड रहता है। तो आपका जो एपीआई है जॉब ट्रिगर करने के लिए, राइट, थ्रू स्क्रिप्ट्स एट दैट टाइम, राइट, दिस वैल्यू इज यूज्ड। ओके, सो आई एम सेइंग सेव एंड फिनिश, start using Jenkins, and now it will ask me, right, my username password for login, right. If I log out I can use login using admin, and this is my right landing page of you can say Jenkins, and there are breadcrumbings, right, for creating job, right, new item, for adding users, people, right, for history of build that you have run, you can see, right, for all the projects that you have created। manage Jenkins very important, where we have all the configuration and everything। you can create multiple view as per project specific, so the project कैसा दिख रहा है आपका, जॉब्स कैसा दिख रहा है, वो उसके लिए लोकेबल रिसोर्सेज, अगर कोई आप प्रोजेक्ट में रन कर रहे हो, कोई फाइल को लॉक करना है तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। इट्स वेरी न्यू फीचर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दिस मैनेज जेंकिंस, and in this, right, we need to understand right, configure system, global tool configuration, right, manage plugins, and when we will discuss about master slave, right, which is an exercise for you, I will explain you कि क्या करना है। और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और जो मैंने बनाया हुआ है, राइट, खुद करके, तो आपको उसको फॉलो करके आपको मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगर करना है, राइट। और
मल्टीपल जॉब्स रन करके देखना है कि लैंड अप कर रहा है कि नहीं. तो आई विल राइट गिव यू अ सेशन और वॉक थ्रू ऑन दोस राइट एस्पेक्ट कि मास्टर स्लेव क्यों चाहिए. और जब हम लोग कॉन्फ़िगर सिस्टम ये सब पढ़ रहे होंगे तभी वो पिक्चर में आ जाएगा जब हम लेबल डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो वी नीड टू गो थ्रू दिस राइट. इन अर्लियर वर्जन राइट देयर इज ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन. बाद में उसको तोड़ दिया और एक कॉन्फ़िगर सिस्टम बनाया और एक ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन बनाया और एक ग्लोबल सिक्योरिटी बनाया. ठीक है. तो पहले ग्लोबल सिक्योरिटी अलग ही था बट बहुत इनिशियल स्टेज में वो भी एक ही था. तो इन सबको इसलिए तोड़ दिया. ये जो कॉन्फ़िगर सिस्टम है ये मास्टर का कॉन्फ़िगर सिस्टम है. मास्टर मतलब जेंकिंस सर्वर का कि कैसे जॉब रन होंगे, कितने थ्रेड होंगे, राइट. मतलब प्रोजेक्ट का नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, राइट. आपका ईमेल कॉन्फ़िगरेशन जो करना है वो कहाँ पे होगा, कॉन्फ़िगर सिस्टम पे होगा. लेकिन जो टूल के साथ जो इंटीग्रेशन है, जैसे कौन सा गिट क्लाइंट यूज करोगे, कौन सा जेडीके यूज करोगे, कौन सा मैवन यूज करोगे, अगर सोनार क्यूब करना है राइट, उसका कॉन्फ़िगरेशन सब कहाँ पे आएगा, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा. ठीक है. और ये जो मैनेज प्लगइन है ये अफेक्ट करता है ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर सिस्टम को. फॉर एग्जांपल मेरे पास सोनार क्यूब से इंटीग्रेशन करना है तो पहले तो मुझे प्लगइन डालना पड़ेगा. तो मैनेज प्लगइन में जाके मैं क्या करूंगा, सोनार क्यूब सोनार स्कैनर का जो प्लगइन है वो डालूंगा. उस हिसाब से मुझे कॉन्फ़िगरेशन कहाँ दिखेगा, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर सिस्टम में जो चेंजेस है उसके इफेक्ट यहाँ पे दिखेंगे. ठीक है. तो ओवरऑल ये चीजों पे हमें अभी वॉक थ्रू करना है. आई विल नॉट स्टार्ट बिकॉज ऑलरेडी इट इज 11. सो वी विल स्टार्ट राइट विद राइट फ्रेश. और बोलते हैं ना कि एक साथ जाएंगे तो थोड़ा क्लियर रहेगा, क्वेश्चंस भी रहेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे. तो हम कॉन्फ़िगर सिस्टम और ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे. बट आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू इंस्टॉलेशन एंड टू क्या बोलते हैं, रोम अराउंड राइट, यूआई पे थोड़ा घूमना. तो उस वो एक्टिविटी करो और खास करके कॉन्फ़िगर सिस्टम, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ग्लोबल सिक्योरिटी, मैनेज प्लगइन तो पे करो. मैनेज प्लगइन में चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ. देयर आर सेक्शंस कॉल्ड अपडेट, अवेलेबल, इंस्टॉल्ड, राइट, एंड एडवांस्ड. तो ऑब्वियसली जो अवेलेबल है उसका मतलब है कि प्लगइन है बट आपने इंस्टॉल नहीं किया है. राइट. इंस्टॉल्ड मतलब आपने प्लगइन इंस्टॉल्ड किया हुआ है, वो इंस्टॉल्ड में आपको वो प्लगइन दिखेंगे जो आपने इंस्टॉल किया. और अपडेट्स में जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया अगर उसके लिए कोई नया अपडेट आया है तो अपडेट्स में दिखेगा. और एडवांस में क्या है, एडवांस में आइदर यू वांट टू यूज जेंकिंस का जो रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी प्लगइन, राइट. आपके पास अगर इंटरनेट है तो आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं. लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज करें तो आपको प्रॉक्सी के थ्रू कनेक्ट करना है तो वहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि किस प्रॉक्सी के थ्रू यू वांट टू कनेक्ट टू जेंकिंस का सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर प्लगइन, राइट, इंस्टॉलेशन. और सेकंड एडवांस का फीचर ये कि आप खुद के प्लगइन्स भी डेवलप कर सकते हैं. देयर आर प्लगइन डेवलपर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, फॉर जेंकिंस जो as per need right custom plugins create करते हैं. So those are nothing but programmed JPI extended और HPI extended codes. तो आप अगर आपको कोड बना रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आपको वो प्लगइन इंस्टॉल करना है जो JPI HPI कोड बनाया है तो आप एडवांस में जाके उसको अपलोड कर सकते हो और उसके इफेक्ट्स आपको आपके ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर सिस्टम में दिखेंगे जैसे आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको यूज करते हो. ठीक है. So these are some broader aspects that I have given you. But yes, right, in the next session, first we will do a UI walkthrough and then we will create our first job and we will do Git and Jenkins integration. Because हम लोग क्या करेंगे, मेरा जैसे ये एक रेपो है तो हमारा ये मेरा कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट किसी राइट अलग सर्वर पे रन हो रहा था, वो है मेरा गैप. तो मेरे पास मेरे स्टूडेंट का ही है, मेरे से ही लिया हुआ है. हाँ ये मेरे पेज में ही हुआ. I will go to my repository. Your repositories. तो इसमें जैसे हम लोग पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट. तो ये हमारा कोड है. तो अभी आपने मैवन में देखा था जैसे हमारा सोर्स कोड था, राइट. ये सारे मैंने जेंकिंस में मेरा कोड यहाँ पड़ा हुआ है. मेरा pom.xml राइट यहाँ पे पड़ा हुआ है. इस pom.xml के बेसिस पे राइट वी विल बी कॉन्फ़िगरिंग राइट थिंग्स लाइक कहाँ पे हमें डालना है, नेक्सस पे डालना है, लोकली डालना है. तो पहले हम लोकल करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट डाल के एक नेक्सस सर्वर पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे. उस तरह की एक्टिविटीज हम करेंगे. मतलब any commit on my code will trigger the job in Jenkins and do the necessary right creation of executable binary and deployment. तो वो सब हम करने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में. Okay guys, any questions before I close it? I just want वो आपने जो जेनकिंस का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल था ना एक बार वो ओपन ओके आपको देखना है. ठीक है मैं करता हूँ. ये कॉन्फ़िगर सिस्टम नहीं ये नहीं ओके कंसोल में लिया था ना टर्मिनल में. कंसोल. हाँ
Okay. config.xml खोलना है. इसमें जो आपने बोला ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी, हाँ. उसको हमको क्या करना है, रीड एक्सेस उसको. हाँ, डिनाई एनोनिमस रीड एक्सेस है ना, जो ट्रू है इसको फॉल्स करना है. इसको फॉल्स करना है और ऊपर में यूज सिक्योरिटी इसको फॉल्स करना है अगर पासवर्ड चेंज करना है या वो राइट लॉगिन करना है विदाउट पासवर्ड. ठीक है. Okay, anything else? If not, so I will suggest you do the installation of Jenkins, right? And if you do it right, so that right propagating with the jobs that I will be creating easier for you, right? जो मैं क्लास में बताऊंगा फटाफट आपके उसमें implement कर पाओगे. तो आपका Jenkins setup करके अगर कोई challenge आएगा, let me know, right? I will help you. Sure. दीपक ये वीडियो पोस्ट कर देना. Yes, I will. Yeah. Okay, guys. Thank you, everyone. Bye. Take care. Yeah, bye. Bye. Thanks. Have a good day. Bye. Yeah. Bye.